Q2 of FY26 should have been the Ola's biggest quarter. Festive sales, new stores, and fresh launches. Instead, revenue fell by 17%. But here is the twist. The margin jumped by over 30%. The cell factory went live, and Ola's first homegrown batteries powered real vehicles. A miss on growth, but a win on future. So now let's look at what they had projected in Q1, what they have achieved in Q2, and what's the verdict. Now let's first look at the revenue and the volumes. They projected a 40 to 50% jump in revenues. So revenues were expected around 1,150 to 1,250 crore. Now if you look at the actuals, it's around 690 crores. Quarter on quarter is negative 17%. And if you look at the number of units, it's minus 23%. So the verdict, they missed the projection badly, and there was no festive lift. Now let's come to the gross margin in the EBITDA. Projection was it was to improve to 20 to 25%, and EBITDA losses around 100 crore. Now what they have achieved, 30% margins. EBITDA, if you look at, is around 137 crore, and auto EBITDA turned positive, 0.3%. Verdict, margin beats guidance, and EBITDA improved strongly. So on this front, they have achieved what they said, or they have overachieved. Now let's look at cell manufacturing. First, 48680 cell shipment and deliveries. This is what they projected in the second quarter. Confirmed. First 4680 vehicle delivered, 2.5 gigawatt hour line commission. So they met the target on the second front also. Now let's look at the cash flow and the liquidity. They projected that they will maintain around 2,000 crore cash even with capex. This is around 3,105 crore gross cash, and bank borrowings around 2,764 crore. So very healthy cash position has been maintained. And now let's come to the product and the tech progress. A rare earth free motor launch they projected next quarter. Ferrite motor certified October 2025. New bike models ramped up. So again, delivered as promised. Now I have got 5 slides in more detail. If you go, this is about the revenue projection. Now this is about the gross margins, and this is about the cell production. And if you go, it's about the cash and the bank balance. And finally, is about the rare earth free motor. So we have got 5 slides where we will discuss the Q2 performance in much detail. And just in case if you need these slides, just send me your email ID on the comment section. So now let's discuss the revenue part. 40 to 50% was projected quarter on quarter, and it was expected around 1150 to 1250. Like I said earlier, actuals are down 17%, Q on Q, and this is a miss. Festive demand failed to push up, their volumes and the sales. Units unsold, 70 to 80 K units. 52,566 units, again down 23% Q on Q. Festive volumes collapsed, weak demand. Average selling price 1.31 lakh plus 8% Q on Q. It is around 1.31 lakh plus 8 Q on Q. Prices held firm, so no discount war. They are doing well on the pricing front. Retail network 200 stores by Navratri, not disclosed in Q2 filings, and no update on expansion, execution, visibility, and all. Maybe this will come in the investors call. Festive impact, if you see, anticipated strong demand, seasonal surge, but revenue and volume fell, and festive promise not met. So it's like mainly because of this, the revenue miss, and both on the value and the quantity side happened. Now this is the second chart on the margins, the consolidated margins. In Q1 they projected around 20 to 25. For Q2 it is around 30%, much better. So strong beat and efficiency gains. If you look at auto business gross margin 25%, and this is what they projected is 30.7%. This is mainly because of material cost savings and all. EBITDA consolidated अगर देखें तो 100 करोड़ 137 करोड़ लॉस नैरोड, बट स्टिल काफी हाई है. ऑटो सेगमेंट का EBITDA अगर देखें, they are approaching break even. 0.3% is what they achieved. This is what they projected.
मेजर माइलस्टोन है जहां पर ऑटो में हमने देखा है कि एबिटा पॉजिटिव हो गया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर देखें, मूविंग क्लोज टू न्यूट्रल, अंडरलाइंग प्लस 15 करोड़, ऑपरेशनली टर्न अराउंड हो गया है। एंड फाइनली ऑपेक्स देखें ऑटो का, टाइट कॉस्ट कंट्रोल एक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट दे सेड इन Q1, 258 करोड़ एंड क्लियर एक्सपेंस डिसिप्लिन। सो यहाँ पर अगर हम देखें ऑन द मार्जिन फ्रंट, ओला इलेक्ट्रिक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आते हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस में। 4680 सेल का प्रोडक्शन बोला था कि इट विल बिगिन फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन। एक्चुअल में फर्स्ट बैचेस प्रोड्यूस हो गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग। सो दिस इज द माइलस्टोन दे हैव अचीव्ड। वर्टिकल इंटीग्रेशन इज विजिबल नाउ। गीगाबाइट फैक्ट्री कैपेसिटी अगर देखें, रैंप अप बोला था 1.4 गीगाबाइट टू 5 गीगावाट एनालाइज होगा, 2.5 गीगावाट कमीशन, ऑन ट्रैक फॉर 5.9 गीगावाट बाय March 26. So ahead of schedule, expansion momentum very strong. Cell powered vehicle deliveries अगर देखें तो बोला था कि expected first customer deliveries, first vehicle using 4608 cell rolled out, तो ये भी कर दिया है, execution success हो गई है, tech transfer completed. Battery cost trajectory अगर देखें तो बोला था early in-house production to lower cost, जो अगर in-house use होगा तो cost lower जाएगी, cost savings small but visible in margin expansion, जो हमने पहले स्लाइड देखा तो मार्जिन में वो दिख रहा है, डायरेक्शनली पॉजिटिव है, इंटरनल एफिशिएंसीज दिख रही है। नाउ सेल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड स्मॉल सिंबॉलिक रेवेन्यू, दिस इज व्हाट दे सेड इन Q1। 4 करोड़ का सेल सेगमेंट रेवेन्यू आया है, कमर्शियल ऑपरेशन इनिशिएटेड, मोमेंटम मोनेटाइजेशन हैज स्टार्टेड ऑन दिस फ्रंट। सो यहाँ भी अगर हम देखें ऑन 4680 दे आर डूइंग वेल हियर। कैश एंड बैंक बैलेंस देखें तो मेंटेन 2000 करोड़ पॉजिटिव कैश, दिस इज व्हाट दे सेड। 13105 कैश इक्विवेलेंट, 807 का बैंक बैलेंसेस है, स्ट्रांग लिक्विडिटी वेल अबव थ्रेशोल्ड। बोरोइंग्स मॉडरेट लेवरेज प्लान 1700 करोड़ का एनसीडी प्लान था, तो 2760 टोटल डेट है, 1740 लॉन्ग टर्म प्लस 1024 शॉर्ट टर्म। सो डेट राइजिंग बट स्टिल मैनेजेबल रिलेटेड टू कैश पोजीशन। आईपीओ प्रोसीड के बारे में 2594 पेंडिंग था डिप्लॉयमेंट के लिए, 2301 अनयूटिलाइज्ड, 1669 एफडीज में है, 432 देयर मॉनिटरिंग अकाउंट में है। सो एम्पल रनवे फॉर कैपेक्स एंड आरएनडी विदाउट फ्रेश इक्विटी, बट दे हैव कम आउट विद अनाउंसमेंट दैट दे विल रेज फ्रेश मनी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मूव क्लोज टू न्यूट्रल बोला था, अंडरलाइंग प्लस 15 करोड़ है, रिपोर्टेड -40 करोड़ है, नियर न्यूट्रल है ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल कंट्रोल। Coming to free cash flows, positive by बोला था FY26 and still negative है at group level but trending upwards. Free first cash flow target achievable if margin gain sustain, तो same margin रहते हैं, sustain रहते हैं आना 2 क्वार्टर में, तो free cash flow भी अच्छा है। फंडिंग प्लान्स, प्रोग्रेस ऑन एनसीडी इशुएंस एंड डेट फैसिलिटी चल रहा है, बोर्ड ने अप्रूव किया है, जो मैं बात कर रहा था 1700 करोड़ का एनसीडी एंड 1500 करोड़ का इक्विटी इन October 25. So flexible funding levers in place. Now let's come to the rare earth free motor. FY1 में बोला था launch and certification expected next quarter, मतलब ये Q2 में ferrite motor certified in October 25 में, delivered as promised, so key tech milestone achieve हो गया है। मोटरसाइकिल लाइनअप एक्सपेंशन बोला था, स्केल अप रोडस्टर को स्केल अप करेंगे, क्रूजर एंड एडवेंचर वेरिएंट्स। रोडस्टर सेल्स 4x हुई है, Q&Q पीक्ड, 450 यूनिट्स a डे हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रैंप अप है, पॉजिटिव कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू बाइक। न्यू प्लेटफॉर्म जेन 3 मैक्स के बारे में बता था, हायर सेल्स ऑफ जेन 3 के बारे में बोला था, दिस विल हेल्प इन मार्जिन। जेन 3 प्लेटफॉर्म शेयर इज राइजिंग, सो वो मार्जिन में भी दिखेगा। इंटीग्रेशन इंप्रूविंग एंड यूनिट कॉस्ट इज ऑल्सो इंप्रूविंग। सॉफ्टवेयर ओएस के बारे में इनहैंस ओटीए फीचर बोला था, एडीएस मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट प्लान, मूव टू ओएस 6 फीचर्स रोड मैप्ड फॉर अर्ली FY27 रोल आउट। ऑन ट्रैक है बट नॉट येट लाइव, सॉफ्टवेयर साइकिल स्लाइटली लैगिंग हार्डवेयर पेस। प्रोडक्ट इनोवेशन पाइपलाइन, मेंटेन इनोवेशन, ये हमने बोला था, लीडरशिप एंड न्यू फीचर्स के बारे में बताया था, फोकस्ड ऑन मोटर टेक, बीएमएस इंप्रूवमेंट एंड चार्जिंग इंफ्रा इंटीग्रेशन। वर्डिक कंटिन्यूड आरडी इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन नैरेटिव इंटैक्ट है। सो ओला ने फेस्टिवल डिमांड तो मिस किया है बट नैरेटिव काफी पॉजिटिव लग रहा है, एंड नैरेटिव ये है, इट हैज लेड द फाउंडेशन फॉर ए एनर्जी सॉल्यूशन का, एंड लेट्स सी व्हाट द कंपनी सेज इन इट्स इन्वेस्टर कॉल today evening. And just to make a disclosure, I have investment in Ola Electric, and in case you want to invest or take a decision on buy, sell, hold, I suggest do consider
your investment advisor.